Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So today we will start our new chapter which is about Microsoft Excel. So I would like to tell you Microsoft Excel is a very interesting tool by which we can create our data in a tabular format. So Microsoft Excel is basically used to create report cards, to maintain reports of any company and organization, and you can also apply all the formulas, logical or mathematical formulas very easily in Microsoft Excel as per your need. So without wasting any time, let's start. Many different boxes which are called tiles. There are many tiles are available. You can see business, academic, student, personal, family budget, and many different tiles are available which you can use as per your need. Now this time I am going to click on blank workbook. So after clicking on blank workbook, you will see this type of interface. Now this interface is divided into different parts. So let's discuss about all of them. So firstly I would like to tell you, as you can see at the top of the page, there is a bar. This bar is known as title bar. As you can see, book 4 is written here. So it is showing the name of your workbook. So whenever we will save this workbook by any name, so the title bar will show us the same name at the top of the page. Now next one, you can see there are three different options are available. First option is to close this document. Second is maximize. It is used to maximize. And third one is minimize, which is used to minimize your document. Now as you can see, the complete portion in this rectangular area is known as ribbon. This complete area is known as ribbon, and ribbon is also divided into several categories. Now you can see there are many options are available like file, home, insert, page layout, formulas, data. All these options are called tabs. So we can pronounce them like file tab, home tab, insert tab, page layout tab, formula tab, etc. Each tab has its own groups. So you can see in home tab many groups are available like clipboard group, font group, alignment group, number group, styles group, cells group. So each tab has several groups, and in each group there are many options are available. Like you can see in font group there are many options like bold, italic, underline. You can change the size of font, you can change the font style, you can change the color of your font. So many different options are available which you can use as per your need. Now the next part, you can see at the upper left corner there is a bar which is known as quick access toolbar. So quick access toolbar, you can identify it by its name also. It is used to access some features on just a single click. Quickly you can access many different features. As you know, if you want to save a file, you just have to click on file and then you will click on the save option. But if you want to save your file quickly, so you can simply click on this icon and it will save your file quickly. So as you can see on quick access toolbar there is a drop down arrow. So if you will click on drop down arrow, it will show you different options. So it means you can add or remove options from your quick access toolbar as per your need. Now you can see there save, undo and redo options are available. If I want to add more options,
For example, I am going to add new and quick print. So after clicking on both the options, you will see now both the options are available on quick access toolbar. So now if you want to print your document, you just have to simply click on this option, or if you want to take a new workbook, so you just simply click on this option. So these are very useful features. Now the next one is, this is a very interesting feature in Microsoft Excel 2016. You can see tell me what you want to do. Basically this feature works as a search box. You can search different functions with the help of this box. For example, if you want to add a chart, so you can simply write add a chart. So it will show you all the options related to adding a chart. You can see it is showing insert column or bar chart, statistic chart, line or area chart, scatter chart, and many different options are available. So if I will click on column or bar chart, so it will show us all the options related to that particular box, that particular chart. So now you can choose any one of them as per your need. Now the next one is formula bar, which is a very interesting feature of Microsoft Excel. If you are working on Excel, you have to be aware about this function. So formula bar shows us the data of the active cell, and it is also used to show the formulas. It means, as you can see on this workbook, there are many different boxes, small boxes are available. These boxes are called cell, and there is a particular box with green boundary. दिस इज़ योर एक्टिव सेल. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल में जो आपकी फ़ाइल होती है कंप्लीट फाइल, इसको हम एक वर्कशीट बोलते हैं. लेकिन वर्कशीट के अंदर जो ये इतनी आप स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हैं, दिस स्क्रीन इज़ नोन एज वर्कबुक. कंप्लीट जो फाइल होगी जिसको आप सेव कर लेते हैं वो आपकी वर्कशीट है. लेकिन जो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, दिस इज नोन एज वर्कबुक. ईच वर्कबुक इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम. हर एक वर्कबुक रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं रोज की बात करूँ सो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर. एंड यू कैन ऑल्सो सी द कॉलम्स ABCDEFGHI. सो मैनी रोज एंड कॉलम्स आर अवेलेबल. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे आपको ये बॉक्सेस जो देखने के लिए मिल जाते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. इन बॉक्सेस को हम लोग सेल्स कहते हैं. ये एक सेल है, ये दूसरा, ये अलग अलग सेल्स यहाँ पे हैं. लेकिन जिस भी सेल पे आप वर्क करते हैं, इतने सारे सेल्स हैं, और आपने अगर इस वाले सेल पे क्लिक करा, सो ये सेल आपका एक्टिव सेल कहलाएगा. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फ़िलहाल हमने इस वाले सेल पे क्लिक किया हुआ है. सो इसकी बाउंड्री ग्रीन कलर की आपको शो हो रही होगी यहाँ पर. सो ये आपका एक्टिव सेल है. और एक्टिव सेल में जो भी आपका डेटा लिखा हुआ होता है, वो सेम डेटा आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है. अगर मैं किसी और ऑप्शन पे एड्रेस वाले पे क्लिक करूँगा, तो आपको फॉर्मूला बार में यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ शो होगा, या जिस भी मैं पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करता हूँ उस सेल का डेटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा. नाउ ईच सेल हैज़ इट्स ओन सेल एड्रेस. हर एक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है. सो जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम जो ये लिखा हुआ है, इसके अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम है यहाँ पर A, और अगर रो की बात करें तो रो है 2. सो इसका सेल एड्रेस हो गया A2. यहाँ पे आप देख सकते हैं A2. ऐसे ही अगर मैं इसकी सेल एड्रेस की बात करूँ, तो आप देखेंगे कि इसका जो है कॉलम है वो है E, एंड रो जो इसकी है वो है 5. सो इसका सेल एड्रेस हो गया इस पर्टिकुलर बॉक्स का E5. सो ऐसे ही आप सेल एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जब भी आप एक्सेल में वर्क करेंगे और आपको फॉर्मूलाज को यूज़ करना होगा, सो इन सेल एड्रेस के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
Now the next option is, as you can see, these are called scroll bars. There are two scroll bars are available which you can use to move your page up and down and left and right. सो ये दो स्क्रॉल बार है जिनके हेल्प से पेज को अप डाउन किया जा सकता है और लेफ्ट राइट भी किया जा सकता है. नाउ एट द बॉटम यू कैन सी इट इज शोविंग शीट वन. इट इज शोविंग शीट वन. सो शीट वन जो ये यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब जिस हम पर्टिकुलर वर्कबुक पे वर्क कर रहे हैं वो हम शीट वन पे कर रहे हैं. दिस इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट शीट. बाय डिफ़ॉल्ट ये शीट वन ही यहाँ पे आती है जब हम एक्सेल ओपन करेंगे. लेकिन इफ़ यू वांट टू ऐड मोर शीट्स यू कैन क्लिक ऑन प्लस आइकन. सो ये प्लस आइकन जो यहाँ पे आपको बॉटम में शो हो रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे सो आप एक से ज़्यादा शीट भी यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं और उनको भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. नाउ एज यू कैन सी एट द लोअर राइट कॉर्नर, so some options are available. So you can see it is showing plus and minus icons. So it means with the help of plus or minus icons you can increase or decrease the size of your workbook. आप अपनी वर्कबुक के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं इसकी हेल्प से इजीली. So now last but not the least, this option is known as backstage view. On backstage view, you can see it is showing different options like information, new, open, save as, print, share, export, publish, close, etc. So you can use all of them as per your need. As you can see, first option is of information. So if you will click on this option, it will show you all the information related to your workbook. It is showing the size of your workbook, title, text, categories and many different options are available. Now many options are also available here. If you will click on new, so you can add a new workbook. You can open your previous workbook. You can save your workbook. Save as, it means you can change the name of your workbook. You can print your workbook. You can share, export and many options are available. If you will click on print, so it will open this type of interface. So with the help of this option you can easily print your workbook. Now it is showing different options like copies. It is showing the name of your current printer and many different options are available. So students, it was a basic class, introduction class of Microsoft Excel, and I hope you will like this video and this video will help you a lot to understand the basic of Microsoft Excel. From next videos we will discuss Microsoft Excel in more detail and all the useful features of it. So that is it for today students. Stay healthy, stay safe and thank you so much.